गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम HTML टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिया। चलते स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन कौन देला ना इन HTML टैग डिफाइन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ को सिंबल टा हमरो डिफाइन करूची ना स्मॉल ग्रेटर देन p स्मॉलर देन तापरे पारा देची ऑप्शन बी ऑप्शन सी देची टेबल ऑप्शन डी देची सेक्शन। तो आर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में हम एक्सटेंशन कौन रहुची ना .html ऑप्शन सी देला बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी देची नन ऑफ दिस। हमर कोडा हबो ना both A and B is the correct answer. Option C is the right answer. Then next question, HTML tag begins with symbol dash symbol को symbol द्वारा हमें चिन्हटा करछे smaller than greater than एटा गोटे हमर देछि पोएल्ट रे यूज हे जोटा के हमर कोन कहले एटा हमर फैक्टोरियल चिन्हटा जोटा तापर फैक्टोरियल स्मॉलर देन ताले हमर कोटा यूज हुए ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन HTML टैग एंड्स विथ डैश सिंबल कोटा एंड सिंबल हमर शो करछि ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन HTML कमेंट बिगिन्स विथ डैश सिंबल बिगिन्स रे कोड सिंबल हम शो करछि ना ऑप्शन C is the right answer. HTML comment ends with symbol को symbol टा आपनकर end रे काम करछि को symbol टा ना ऑप्शन D is the right answer. Then SGML stands for dash ऑप्शन ए देला स्टैंडर्ड ग्रांड मार्कअप लैंग्वेज सिंक्रोनाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन सी देला स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन डी देला सिंपल जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज कोटा हबो ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन ना DTD स्टैंड्स इन मार्कअप लैंग्वेज फॉर डैश DTD रो फुल फॉर्म कोन ना डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। Then your next question DDL stands for कौन ना डाटा डिक्शनरी लाइब्रेरी very important question। then जो कौन कहला ना most of the HTML tag have a corresponding closing tag which begins with a symbol को symbol हमरा यूज होची ना ऑप्शन B is the correct answer। Then next question if HTML tag does not have a explicit closing tag the tag may be closed with a dash symbol को symbol रे हमर tag यूज होची ना ऑप्शन C सब मन रखियो पड़ो कारण बहुत ये सब बुझियो कहले क्लास करियो पड़ो ए MCQ तो मोर तो एबे नुआ चैनल खोली छी जेहेतु क्लास करियो मते समय नाही तो आपण YouTube रु थ्योरी क्लास कर दे पुणी आसी के प्रैक्टिस सेट करिवे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइटल टू बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडोज ऑफ ब्राउज़र टैब इन इज एनक्लोज्ड इन डैश कोडा हबो ना ऑप्शन C is the right answer। Then next question paragraph is contained inside HTML tag कोडा हबो A is the right answer। Then next question elements to be center aligned in browser display are enclosed inside HTML tag HTML tag रो कोड हमरा यूज होची
Now option A is the correct answer. Then next question. Elements to be left alignment in browser display are enclosed inside a dash HTML tag. को HTML tag यूज होचे हमरा. Now option B is the correct answer. Elements to be right aligned browser display are enclosed inside a HTML tag. कोड़ा. Option B is the right answer. Elements to be justified aligns used with left and right edges in a browser displays are enclosed inside the in a HTML. Code tag use A3. Now 15 C how. Then the next question. HTML tag display an image in HTML page. Koda. Option D is the correct answer. Then next question. HTML tag displays a table without border. को symbol आमे use करजे ना ऑप्शन ए. केवल टेक्निकल पिला ही बुझी पारे ए सब कोडिंग आउ केही भी बुझी पारेनी. ए सब बुझिया ପାଇଁ बहुत थियोरी क्लास प्रथम करिया पड़ो. Then next question. HTML tag creates allocate hyperlink for navigation inside the same page or between different pages. Allegation by हमारा कोड यूज है ना 18A sorry 18A हवा. Then next question. HTML tag displays a table with border thickness of 1 pixel. 1 pixel में हमें कौन यूज करिया. Now option C is the right answer. Then HTML tag can control font face size and color. कोड हवा ना 20D. Set. D our right. HTML tag displays heading of the largest size. Heading में यूज होता है. कोड़ा B हवा right answer. एटा भी गोटे important question. Then next question. HTML tag display heading to the second largest size. Second largest size कोड़ा. Now option C is the right answer. तापर कौन कहला ना HTML tag display heading of the third largest size कोड़ा. Now option D is the correct answer. Then next question. HTML tag display heading of the smallest size कोड़ा. Now option A is the correct answer. Then next question. In HTML text size represent the normal size of the text. Normal size of the text कितने 27. Option B is the correct answer 0. In HTML5 font tag has been coded. Appreciate ना reinstated ना deprecated ना beautified. Depreciate. Option C is the correct answer. 29 कौन कहला. Color can be specified using color name like red, gray, blue, canny, and magenta, etc. 29. Option A is the correct answer. Then asla very important question. एथिरु जेम देले भी गोटे पड़ो. कौन कहला हमरा 29 गला. वर्तमान 30 क्वेश्चन देखिया. ना color code has FF340 stands for को color पाई ना option C red पाई. Then next question. Color code of has 00FF00 stand for कोड़ा ना black पाई.
Then next question. Color code has 4टा 0 double F stands for color. Co color 3. Now option A is the right answer. Then next question. Color code has 6टा 0 stands for co color. এটা को कलर हबो ब्लू सॉरी এটা को कलर हबो ना ग्रीन देन नेक्स्ट क्वेश्चन कलर हैज केतेटा एफ 6टा एफ 6टा एफ कोथि में ना ऑप्शन ए व्हाइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन in HTML the 2-digit color code value range from 00 in hexadecimal. Now option C is the correct answer. Then your next question. Dash tag is used to display different HTML pages in a single window. को टैगटा हमारा यूज होचे सिंगल विंडो पे ना फ्रेम बेस्ड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन width of elements like image table etc can be controlled using dash attribute को attribute रे यूज होचे ना ऑप्शन ए इज द right answer then next question height of element like image table etc can be controlling dash use attribute now height option B is the correct answer then question number 40 width and height value can be specified in or in pixel it answer te diya jaichi option C percentage रे नाले पिक्सेल रे HTML tag creates a break HTML tag create break माने कौन को कोटा यूज होचे ना ऑप्शन डी हमरे यूज HTML tag display an image named global jpg at 8% of the total width available in the browser option D then next question scrolling text may be created using dash tag in HTML कोड़ा यूज होची ना ऑप्शन ए sorry option A is the right answer then 44 question text scrolling to left may be created dash tag in HTML 44 A is the right answer then next question 45 text controlling of to right may be created using tag in HTML 45 कौन option B is the right answer text scrolling upward may be created using tag in HTML 46 कौन option C is the right answer text scrolling downward may be created using tag in HTML 47 option D then 48 tag in HTML creates a clickable hyperlink कोड हमरे यूज होची ऑप्शन D HTML tag display a table without border A option D is the correct answer then next question HTML tag display table with border thickness of 1 pixel कोड़ा हबो ना ऑप्शन C is the right answer then तुम वही होमवर्क रहला ना HTML tag is used to mark header column for a
टेबल को टैगटा आमर यूज हो कलम टेबुल कलम आमर को टैगटा यूज हो सब को ऑप्शन एवं क्वेश्चन की बुझ गले प्रथम HTML थ्योरी क्लास करा पड़ो जेहेतु यहाँ मुझे प्रैक्टिस भी आस चलती तो से केवल MCQ एंड तार आंसर गुड़ा आसो आउ ऑप्शन गुड़ा बुझाइले आर किसी भी ना कारण ये सब गोटे गोटे कोड गुड़ा ये सब मन रखा पड़ो तेणु ए बुझा जिन किसी ना बरम बेटर तुम्हें समस्ते थ्योरी क्लास देखो तापर आसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर क्या कहार केतेटा रहा पुणी कमेंट रे जणाइब थैंक यू।